start. Okay, thank you so much. We are starting the session for this morning PhD coursework for geography students. This morning our lecture will be on a modern period, a geographical thought on modern period. And before I start my sessions, I want to thank you once again, Archana Madam, for this opportunity and all the participants for for your participations. And today, before we start this modern period in geographical thought, हम ये करने से पहले एक बार रिकैप करता है कि हम यस्टरडे क्या डिस्कशन किया था. ठीक है? जितना भी ग्रीक एंड रोमन्स कंट्रीब्यूशन था यस्टरडे, वो सब एम्पिरिकल ही था. आपको याद होगा कि जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन किया था, ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स ने कंट्रीब्यूशन किया, तो वो सब एम्पिरिकल ही था. वो ऑब्जर्वेशन किया था एंड देन देयर वाज नो सिस्टमेटिक. राइट, जितना भी कंट्रीब्यूशन एंशियंट टाइम में किया था उसमें सिस्टमेटिक नहीं था. तो अभी मॉडर्न पीरियड पे ये ज्योग्राफी को एक सिस्टमेटिक फॉर्म्स में ले आने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे जियोग्राफर्स ने मेहनत किया था. तो आज ये मॉडर्न पीरियड में ये शुरू होने से पहले आप सबको एक बार याद करना चाह रहा है कि यू शुड रिमेम्बर दैट एंशियंट पीरियड जितना भी जियोग्राफिकल डेवलपमेंट हुआ था वो जियोग्राफर्स का तरफ नहीं था. कोई ऐसा स्कॉलर्स था, फिलोसोफर्स भी था, कोई मैथमेटिशियंस भी था. ऐसा ही करके देयर वाज नो सिस्टमेटिक एट ऑल. बट इन मॉडर्न पीरियड अभी क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है कि इन मॉडर्न पीरियड जितना भी स्कॉलर्स है वो कोशिश कर रहा है कि ज्योग्राफी को कैसा एक सिस्टम को ले आए. ओके, तो हम शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट from the German school of thought. From German school of thought. German school of thought ये in the modern period ये कहलाता है कि it has happened between 1750 to 1850 में शुरू हुआ था. Like the foundations of geography as modern science. Modern science. Now देखो जितना भी contribution तो हो गया था, but अभी देख रहा है कि अभी modern science में चल रहा है. Like in the morning I was telling you that जितना भी ये ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स ने कंट्रीब्यूशन किया था वो सिस्टमेटिक नहीं था. तो अभी मॉडर्न जियोग्राफर्स स्पेशली फ्रॉम द स्कूल ऑफ जर्मन्स दे आर ट्राइंग टू गिव दिस वेरी फाउंडेशंस जियोग्राफी को एक साइंस का तरफ ले आने की कोशिश कर रहा था. तो यहाँ पे हम देख रहा था कि ये सबसे पहले जर्मन स्कूल ऑफ थॉट ने शुरू किया था. ओके, the second half of this period, like between the second half of this period, इसका सेंस मतलब 1750 से 1850 का second half period को हम कहलाता है the time of Humboldt and Richter. This is also known as a classical period. तो ये 1750 to 1850 को हम एक classical period कहलाता है and the first half को pre-classical period कहलाता है. And क्लासिकल फेसिस पे दो एकदम महान, हम बोलता है महान स्कॉलर्स का दो नाम लेता है यहाँ पे, बर्नार्ड बेनर्स एंड एम्यूनल खान. ये दोनों ने बहुत अच्छा तरीका से कंट्रीब्यूशन किया था जियोग्राफिकल ग्रोथ पे इन द जर्मन स्कूल ऑफ थॉट. तो ये देखता है कि बर्नार्ड ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था. बर्नार्ड का बहुत कंट्रीब्यूशन आया था इन द सेंस लाइक इन द प्री क्लासिकल फेज पे उसका कंट्रीब्यूशन हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ कैप्रिनिकोस, केपलर, गैलीलियो. ये सब का नाम तो सुना होगा आप लोग सब. ये सब जियोग्राफर्स तो नहीं है, ये सब साइंस का ही है एंड फिलोसोफर्स है. ये लोग का वर्क से उसका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था. एंड हु एस्टेब्लिश, ये तीनों ने एस्टेब्लिश किया था हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट्स of the universe. आप सबको पता है कि हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो वर्नर से पहले दैट मींस प्री क्लासिकल फेज से पहले जितना भी स्कॉलर्स था वो पूरा क्या है टोलोमीज का कॉन्सेप्ट फॉलो करता था. टोलोमी का कॉन्सेप्ट क्या था, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स था. तो ये जितना भी स्कॉलर्स था
प्री क्लासिकल पहले स्कॉलर्स था, ये सब जियोसेंट्रिक क्लासिकल को कंसेप्ट को फॉलो कर रहा था। तो देखो यहाँ पे देखता हूँ कि वेनर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशंस और द महान कंट्रीब्यूशंस वेनर्स ने किया था कि ब्रॉट टुगेदर ऑल द कंटेम्पररी नॉलेज। इसका मतलब है कि जितना भी रिसर्च था, जितना भी डेटा, जियोग्राफिकल डेटा था, वो वेनर्स ने कोशिश किया था कि ये सब नॉलेज इकट्ठा करके रहना, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी and cartographies में। तो हम in the beginning I was telling you that in the ancient geographical thought क्या हो रहा था कि because they have a lot of data, Greek and Romans को पास बहुत data but systematic नहीं था। तो वेनर्स ने एक कोशिश किया था कि ये सब contemporary knowledge इकट्ठा करने के लिए एक systematic में constructive use पे ले आने के लिए astronomy and cartography के सबसे पहले उसने काम किया था। The second one is he divided the inquiry of geography। Geography को हम कैसा स्टडी करें, तो ये स्टडी करने के लिए इसने पहले बोला था कि दो डिवीजन में बनाया था। फर्स्ट डिवीजन है जनरल एंड स्पेसिफिक, एंड लेटर ऑन दिस जनरल एंड स्पेसिफिक को डेवलप किया था अच्छा तरह से डेवलप किया था। एंड देन क्या हो गया, लेटर ऑन इट बिकम सिस्टमेटिक जियोग्राफी एंड रीजनल जियोग्राफी। तो ये सिस्टमेटिक जियोग्राफी एंड रीजनल जियोग्राफी क्या होता है? अभी आपसे रिसर्च स्कॉलर, आप सब रिसर्च स्कॉलर है, आप लगभग 20 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप सब maybe you may be doing systematic research, or some may be doing regional type of research। तो ये सब concepts देखो, जितना भी आप अभी concept और या आप तैयारी कर रहा है आपका synopsis, ये सब either systematic और regional का तरफ से आ रहा होगा। So he believed in twofold of a division in geography. Okay, so likewise, he was the first person to come up with generic and specific. So he divided the whole geographical studies into systematic geography and regional geography. तो systematic geography में ये क्या करना है, वो general और topical, general और topical होता है, और regional studies में क्या होता है, specific और spatial होता है। So the former approach emphasizes on one aspect of study throughout all the regions. Okay. The regional studies on the other hand, तो क्या करना है, regional studies को क्या होना है, deal with a particular area in details overall its relevance and interrelated elements। तो आप if you are doing a research on regional study on the basis of regional studies, then आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक particular area में deal करना है, and इसमें अच्छा तरह से covering all aspects, especially their relevance and interrelated elements सबको आपको deal करना पड़ता है। ये so this ideas, the concept, ये सब ideas से बनारस से आया हुआ। So the systematic studies lead to the formulation of generalizations। तो generalizations से होता है, laws होता है, and theories होता है। तो what is generalizations? तो अभी आप सब रिसोर्स स्कॉलर से, आप सब कोर्स वर्क जनरल कोर्स वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप सबको याद भी हो भी सकता है, but this generalization is very important। As resource scholars, we have to generalize our studies, only then it will have some impact। आपका studies, आपका thesis impact हो सकता है, आपका thesis गवर्नमेंट यूज कर सकता है, गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जनरलाइजेशन एक होना चाहिए आपका जितना भी स्टडीज होता है। तो सिस्टमेटिक स्टडीज में ये सब जनरलाइजेशन हो जाता है। जनरलाइजेशन में अराइव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको इन्फरेंस करना है, इन्फरेंस को स्टडी करना है। इन्फरेंस का मतलब है कि आपको एक्यूरेटली क्या है, आपका कंक्लूजन आता है रिच ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग होना चाहिए। सो एंड जनरल ज्योग्राफी में क्या होता है, प्रोवाइड द फंडामेंटल that need to be applied in regional studies। Okay. So all these ideas, जितने भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, he have summarized in his work like Geographia Generalist। ये एक बर्नर्ड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी में, Geographia Generalist में।
और जितना भी अभी हम डिस्कशन किया था वो सब यहाँ पे मिल रहा है. This work continued to be the standard geographic reference for about 100 years. So Benares का क्या है, जितना भी वो उसका काम किया था वो एक बहुत बड़ा महान इम्पैक्ट था जियोग्राफिकल थॉट पे, जियोग्राफिकल ग्रोथ पे. एंड ये एक रेफरेंस बन गया 100 साल, for 100 years this has become one of the reference in geographical study. तो Benares का ये geographic generalists become so popular that Newton का contemporary था, तो उसने बोला कि he got it translated in English. तो Germans ये जितना भी geographic journalist था ये सब German भाषा में लिखा हुआ था. तो न्यूटन ने इतना इम्प्रेस हो गया, उसका कंटेम्पररी था, बहुत इम्प्रेस हो गया कि इसको ट्रांसलेशन कर दिया इंग्लिश में. However, scientific trend started with the writing of Benares was interrupted by Kantian's philosophy. Okay. तो जितना भी ये साइंटिफिक स्टडीज चल रहा था ये सबको इंटरप्शन आ गया Kantian's philosophy. Kantian's philosophy is again different. Kant considerably modified the scientific structure of geography as proposed by Benares. तो हम अभी एक महान geographer को, एक scholars का कहानी, we will discuss about Kant, Immanuel Kant. He is also a part of the pre-classical phase in the German school of thought. So Immanuel Kant was a professor of logic and metaphysics at the University of Königsberg. His attractions to geography was by way of his interest in explorations or the acquisitions of empirical knowledge as part of his general philosophical research. So basically, he is not a geographer. He is a professor in logic and metaphysics. But his interest, उसका interest build हो गया था जब वो exploration में interesting हो गया. तो जब somebody start explorations or traveling from one place to another place to ये data collection करने के लिए शुरू होगा, then geographical interest आ जाता है. So Kant pointed out, उसने बोला था कि there are two different ways of classifying phenomena for purpose of academic studies. तो after ये जितना भी वो exploration किया था, इसके बाद उसने एक ऐसा आइडिया निकाला है कि ये जितना भी phenomenon होता है, जितना भी natural phenomena होता है, उसको हम दो तरफ से studies कर पाते हैं. The first phenomena was group according to the nature. एक phenomena है इसको group करता है according to their nature, that is their inherent characteristics. The second one है according to the positions of occurrence in the space or time. The first type of classifications of the field of learning was called logical classification. Since this Immanuel Kant is a professor in logic and metaphysics, so यहाँ पे उसने the first classification को उसने बोला है कि this it can be called as a logical classification. Logical classifications क्या होता है? It gives us a series of systematic signs and each devote to the study of particular kind of phenomena or activities, like examples. यहाँ पे Immanuel Kant ने क्या कहना चाह रहा है? Logical classifications में, if you are devoted to the logical classifications, उसमें आप particular kind of phenomena पढ़ा जाएंगे और या activities. So इसमें क्या क्या है? Field of studies like various branches of natural and physical science. जितना भी हम अभी physical science and natural science है, like botany, zoology, physics, chemistry, also like economy, political science, and sociology, ये सब derive होता है autonomous branch से. तो अपना अपना autonomous branch हो गया. तो यहाँ पे Kant बोलना चाह रहा है कि logical classifications leads to what? Leads to a particular kind of phenomena, a study of a particular kind of phenomena. So यहाँ पे हम देखा रहा है कि physical science पे botany एक दूसरे ब्रांच होता है, साइंस पे zoology different, physics different होता है. Likewise in social science पे भी हम क्या होते हैं, economics होता है, political science होता है, sociology होता है, ऐसा ही अपना अपना ब्रांच चले जाता है.
सेकेंड क्लासिफिकेशन उसने बोला कि वो उसको कहला सकता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक बेसिस फॉर हिस्टोरिकल एंड स्पेशल साइंस। फिजिकल क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल एंड स्पेशल साइंस। आप सबको स्पेशल साइंस तो क्या है पता है जियोग्राफर से? आप सबको स्पेशल साइंस क्या होता है तो मुझे फर्दर एक्सप्लेनेशन करना भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अब फिजिकल क्लासिफिकेशन पे ग्रुपिंग थिंग्स ऑफ डाइवर्स कैरेक्टर एंड ओरिजिन together on the basis of error associations in a horizontal space provided the subject matter of geography, है ना? And astronomy in relation to celestial bodies. तो जितना भी geographical relationship होता है वो error association भी होता है in a horizontal space. तो इन रिलेशन टू अर्थ सरफेस हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोला कि फिजिकल क्लासिफिकेशंस पे हम एरर एसोसिएशन लेना बहुत जरूरी होता है एंड इट लीड्स टू जियोग्राफी एंड आल्सो द एस्ट्रोनॉमी। So grouping of phenomena of diverse origins and nature in terms of their arrangements is in a time sequence provide the subject matter. So these are the two classifications, two scholars, ये दोनों scholars ना प्री क्लासिकल फेज पे। तो अभी हम क्लासिकल फेज में आ जाता हूँ कि सेकेंड फेज ऑफ द 1750 and 1850, between 1850. So the most, the famous modern geographer is Alexander von Humboldt. उसका contribution बहुत है। Kant has prepared the ground and provide the point from where a new beginning could be made. एमिनो खान ऐसा एक ग्राउंड प्रिपेयर करते जियोग्राफिकल ग्रोथ के लिए एक ऐसा ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया कि यहाँ से वहाँ से उसका ग्रोथ शुरू हो सकता है. This task was taken up and most competently accomplished by the another German scholar Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt was most versatile. During the period like 1769 to 1850 period में इसको von Humboldt को बहुत versatile कहलाता था because उसका पास बहुत knowledge था, बहुत field पे उसका expertise था. तो he has enriched several branches of science including geology, mineralogy, and botany, earth mechanisms and meteorology. सब में उसका contribution आ गया. Humboldt lived at a time when, under the impact of imperialist positivist view, as scientific research has started to be treated as specialized pursuits, so that each researcher stands to confine its interest to a given branch of study. यहाँ पे हम्बल का टाइम पे ऐसा हो गया था कि each स्पेशलाइजेशन पे आ गया, अपना अपना स्पेशलाइजेशन साइंस पे अपना अपना स्पेशलाइजेशन हो गया. तो ज्योग्राफी को भी एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट ले आने के लिए कुछ तो करना जरूरी हो गया. So scientific societies all over Europe recognize him as the outstanding scientist of his time. He was variously referred by his contemporaries as the monarch of science and the new Aristotle. तो इतना देखो उसका पर्सनैलिटीज इतना बड़ा था कि उसका कंटेम्पोररीज को उसको बोला था मोनार्क ऑफ साइंस या द न्यू अपोस्टल Aristotle. And why he traveled? He has traveled a lot. Humboldt made a singular contribution to the theory and practice of geography, so that many regard him, along with Carl Ritter, as a founder of the modern geography. As a founder of the modern geography कहलाता है because he has contributed. उसका contribution इतना बड़ा था geography में कि Carl Ritter और ये Alexander von Humboldt दोनों को regard करता है the modern founder of the modern geography. So Humboldt's view of geography as a science was projected quite early in his career. So
उसका एक किताब था प्लांट ज्योग्राफी 1763 में लिखा हुआ था. एंड देन Humboldt एक ऐसा है कि वो ज्योग्राफर्स भी नहीं है. In actual sense, he is not a geographer also, but his interest, उसका interest geography पे था. एंड ये एविडेंस था कि 1793 उसका किताब में ऐसा लिखा हुआ है प्लांट ज्योग्राफी में. इसमें he has clearly stated that geology, botany and zoology all forms part of the investigation of nature, but they study only the forms, anatomy, process, etc. of the individual animals, plants, metallic things, or so, or fossils. Plant geography as a part of the geography trace the connections and relation between which all plants and bound together. And it is designate in what lands they are found. So यहाँ पे in plant geography उसने अच्छा तरह से geography का description किया हुआ कि जियोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, zoology, ये सब अपना अपना specific nature होता है. पर ज्योग्राफी क्या करता है, ज्योग्राफी एज ब्रांच ऑफ स्टडीज, इसमें क्या है बहुत इंटर रिलेटेड सेंस होता है, लाइक इंटरकनेक्शंस, लाइक प्लांट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ कहाँ मिलता है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, ये सब ज्योग्राफिकल स्टडीज में आता है. ये प्लांट ज्योग्राफी में 1793 में एमनुअल खान ने ये मेंशन किया हुआ था. तो हम्बल का एक वर्क है उसका जियोनोसियंस में ऐसा लिखा है कि प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट मॉडल फॉर मॉडर्न जियोग्राफी as the discipline concerned with both inorganic as well as organic phenomena on the earth surface as an interrelated entity. So यहाँ पे भी उसने अमीनो खान ने एक जियोग्राफी का तरफ कुछ लिखा है. I mean बहुत अच्छा से लिखा है कि जियोग्राफी क्या होता है, डील्स विद इनऑर्गेनिक का भी डील करता है एंड ऑर्गेनिक का भी डील करता है, एंड इसका इंटर रिलेटेड का भी इम्पोर्टेंस देता है. दिस 1793 में इसका स्टेटमेंट था, was reproduced in Cosmos. Cosmos is one of the, आप लोग भी सुना होगा उसका, Cosmos is बहुत फेमस है फिजिक्स में. Cosmos as a footnote indicating his continued faith in his original idea of geography. तो Cosmos एक किताब बहुत फेमस किताब है, उसमें भी उसने footnote पे ऐसा ही geographical reference दिया हुआ. The study of Earth's surface or its aerial segments was not, however, an end in itself. The objective was to conduct comparative analysis with the view of formulating general concepts. This statement बहुत important है. The objective was to conduct comparative analysis with a view to formulating general concepts. So explain interconnections between phenomena occurring together in place and for distributional patterns of particular types of phenomena over the Earth's surface as a whole. तो देखो यहाँ पे इंटरकनेक्शंस एमिनो खान ने एक ऐसा ही कोशिश किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि इंटरकनेक्शंस बिटवीन द फेनोमेना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स भी स्टडीज करने की कोशिश किया था. Humboldt had planned to make the fourth volume of Cosmos, few part of work projected to present a complete physical geography, inducting the physical and biological laws of Earth surface as well as the study of land. So Cosmos is basically ऐसा ही a universal science था. Okay, it's all about the physics, but इसमें भी उसने कोशिश किया था कि physical geography का parts उसमें डालने के लिए कोशिश किया था. तो we have 10 minutes left. Alexander von Humboldt is also called the father of temperature mapping. या आपने सुना है ना, this is known, he is also known as a temperature, the father of temperature mapping. क्यों उसको father of temperature mapping कहलाता है? Because he devised the concept of isotherm, which he described in 1860s as a curve drawing through points on a globe which receive an equal quantity of heat. Humboldt initialed diagram maps of average temperature appear in 1817 in an abstract of a much longer paper on
isothermal lines published earlier in that year. इसमें explanation कुछ जरूरी नहीं because he is considered the father of the temperature mapping क्योंकि इसने सबसे he was the first person to use the isotherm and he tried to put उसने मैप पे you know isotherm का line भी कोशिश किया था उसका टाइम पे. He was the first to recognize that isothermal line cut through latitude of different angles, thus disputing the prevalent scientific notions that climate depends solely on latitude. So Carl Rutherford, the next, इतना ही सीज करता है because we don't have any time anymore. The Carl Rutherford next session पे शुरू करता है. Are you all there? Hello. Yes, sir. Yes. Okay. So we will start. Harshita, we will start the Carl Yes, Rutherford contributions in the next section. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. So please share the Welcome. ID and password to the group so we can join. Yes, I'm going to send it now. Okay. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you.